नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है गाइज़ आपके अपने ही चैनल केएफसीएस और स्पोर्ट्स बेट पर गाइज़। तो आज बात करते हैं मुंबई इंडियंस वर्सेस यूपी वॉरियर्स और कल के मैच की बात करें। इसमें यूपी वॉरियर्स भिड़ रही है, तो यूपी वॉरियर्स के लिए कितनी मुश्किल हो गई इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आज की मैच की बात करते हैं मुंबई इंडियंस और यूपी वॉरियर्स के बीच। आप कह सकते हैं कि ऑलरेडी जो है मुंबई इंडियंस जो है अब पिछला मैच हारने के बाद अच्छा कमबैक हुआ और कहीं न कहीं एक ऐसा स्कोर था जो कि मैं समझता हूँ कि गेटेबल स्कोर नहीं था मतलब कि ऐसा स्कोर नहीं था जिसको डिफेंड किया जा सके लेकिन यूपी वॉरियर्स ने बहुत साधारण खेल दिखाया। आप कह सकते हैं जिस लेवल पे क्रिकेट खेलना चाहिए था यूपी वॉरियर्स को, यूपी वॉरियर्स अपने लेवल पे नहीं खेली। अदरवाइज़ मेरे को लग रहा था कि जिस तरह का विकेट को अरुण जेटली स्टेडियम में बैटिंग विकेट प्रोवाइड की गई, उस हिसाब से ये स्कोर चेज़ होना चाहिए था, चेज़ेबल स्कोर था। 160 रन अगर आप अपने लेवल पे भी खेलते तो ज़रूर बन सकता था। तो थोड़ा स्कोर कार्ड पे भी थोड़ा विचार कर लेते हैं, क्या स्कोर कार्ड रहा है और किन कारणों से ये टीम हारी है और क्रेडिट मुंबई इंडियंस की बॉलिंग को देना पड़ेगा। जिस तरह से उन्होंने टारगेट को डिफेंड किया, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात तो टारगेट को डिफेंड किया है बहुत अच्छी तरीके से सक्सेसफुली डिफेंड करना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। सो ज़बरदस्त गेम और ऐसे गेम की जो है अ, दिल्ली वाले भी बहुत खुश होंगे जो भी लोग मैच देखने आएँगे ऑफ कोर्स और ऐसा गेम होना चाहिए और जिसमें बहुत शानदार टक्कर देखने को मिली। तो टॉस जीत के टॉस की बात करते हैं तो मुंबई इंडियंस ने टॉस जीता, टॉस जीत के बैटिंग का फैसला करते हैं। बैटिंग का फैसला ज़रूर करते हैं लेकिन स्टार्ट अच्छा नहीं रहता है। मैथ्यूज़ 4 रन बनाते हैं, 9 रन बनाते हैं, यस्तिका भाटिया। तो दिल्ली आने के बाद जो मुंबई के ओपनर्स का परफॉर्मेंस है वो सेम रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं आता। चेंज आता है नेट सिमरन की बैटिंग में। नेट सिमरन ने आज बहुत ज़बरदस्त बैटिंग की है ऑफ कोर्स और वो एक ऐसे रन्स थे जो कि मुंबई इंडियंस को बहुत ज़रूरत थे क्योंकि एक समय पे स्कोर जो है 17 रन पे 2 हो गए थे। तो 17 रन पे 2 विकेट हो चुका था। पावर प्ले में जब आपके 2 प्लेयर आउट हो जाए तो मुश्किल हो जाता है। मुश्किल होता है और वहाँ से जिस तरह से कवर अप किया शानदार तरीके से नेट सिमरन हरमनप्रीत कौर ने 33 रन बनाए और नेट सिमरन 45। मुंबई इंडियंस के पिछले गेम की बात करूँ तो वहाँ पे जब आप दिल्ली कैपिटल्स ने मेन विकेट चटका दिए थे। विद इन पावर प्ले जब आपने आधी टीम को समाप्त कर दिया था तो मैच जो है मुंबई के हाथ से निकल गया था। बट इस मर्तबा हरमनप्रीत कौर कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट जब चलती है तो चीज़ें अलग हो जाती हैं। तो वही हुआ जब हरमनप्रीत कौर चली और नेट सिमरन के बीच अच्छी साझेदारी होती है लेकिन विकेट्स जाने लगते हैं। गायकवाड आउट कर देती है नेट सिमरन को भी, हरमनप्रीत कौर को भी। ऐसे मुंबई इंडियंस की टीम सजना के हेल्प से 14 गेंदों में जो इन्होंने 22 रन बनाए, वो पहुँच जाते हैं 160 के एक रिस्पेक्टेबल टोटल पे। तो 160 का ये टोटल अगर रियलिस्टिकली बात करूँ जो कि मतलब जिस तरह का ग्राउंड दिल्ली में जो रहता है अरुण जेटली स्टेडियम में गेटेबल टोटल मतलब अगर आप सामने वाली टीम की स्ट्रेंथ की बात करेंगे यूपी वॉरियर्स किरण नवगिरे, एलिसा हेली, ग्रेस हैरिस, अट्टापट्टू तो ये स्कोर बनना चाहिए था, बट ये नहीं बना। बहुत ही अनफॉर्चुनेट था ये यूपी वॉरियर्स के लिए। यूपी वॉरियर्स के लिए ये गेम था कि इस गेम को जीतना चाहिए था क्योंकि आप काफ़ी हद तक आपने वो टोटल बना दिया था, उस टोटल पे रोक दिया था जहाँ पे आपको ये मैच जीत सकते थे बट वेरी अनफॉर्चुनेट यूपी वॉरियर्स ने इस मैच को नहीं जीता और इस मैच की हार की वजह से अब जो ये कॉम्पिटिशन है वो फिर से वन साइडेड हो चुका है। क्यों? अब मैं बताता हूँ आपको पहले स्कोर बोर्ड की थोड़ी बात कर लेते हैं, यूपी वॉरियर्स का क्या स्कोर बोर्ड रहा है। तो यूपी वॉरियर्स की मैं बात करूँ तो यूपी वॉरियर्स का भी परफॉर्मेंस कुछ वैसा ही रहा। ओपनर्स चले ही नहीं बिल्कुल भी। इनके भी 15 रन पे 3 आउट हो चुके थे। इनके 3 खिलाड़ी जब आउट हो गए, ग्रेस हैरिस भी सस्ते में आउट हो गई, तो चीज़ें बहुत मुश्किल होती चली गई। अब कम स्ट्राइक रेट से जब आप बल्लेबाज़ी करते हैं तो प्रेशर बहुत ज़्यादा हो आने लगता है और प्रेशर इतना ज़्यादा आ रहा था कि आप समझ सकते हैं कि पहले 4 बैट्समैन का जो स्कोर है, 2 डिजिट्स है, उसकी बात करूँ तो वो हेली 3, किरण नवगिरे 7, चमारी अट्टापट्टू 3 और ग्रेस हैरिस 15।
इतना साधारण स्कोर और इन चारों खिलाड़ी की मैं बात करूँ, एबिलिटी बहुत है, बट अपनी एबिलिटी पे ये परफॉर्मेंस नहीं कर पाए। सबसे बड़ी चीज़ यही थी, जिसका रीज़न आप देख सकते हैं कि यूपी वॉरियर्स जो है टारगेट को अचीव करने में नाकाम रहती है। ये बहुत बड़ी चीज़ थी, जो यूपी वॉरियर्स के साथ हुआ और यूपी वॉरियर्स की जो हार के यही सबसे बड़े कारण थे, जब आप स्टार्ट नहीं देते हैं, तो मिडल ऑर्डर का बैट्समैन भी कब तक आपको कर सकता है। हालाँकि ज़रूर दीप्ति शर्मा ने कुछ चौके-छक्के लगाए आखिरी में, लेकिन वो नाकाफ़ी था। आपने 118 रन का स्कोर ज़रूर बनाया, लेकिन मुझे लगता है इस मैच को जीता जा सकता था। अगर एक टॉप ऑर्डर का बल्लेबाज थोड़ी बेहतर बल्लेबाज़ी करता, तो मुंबई इंडियंस ये मैच हारती और जब ये मुंबई इंडियंस ये मैच हारती, तो पॉइंट्स टेबल थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है। यूपी वॉरियर्स जो भी 4 पे है, अगर ये मुंबई इंडियंस को हराते, मुंबई इंडियंस के साथ हो सकता था ये टॉप 3 में इनकी जगह बनती। मुंबई इंडियंस नीचे आ जाती, आरसीबी सेकंड पे थी, लेकिन अब सिनेरियो बदल, अब जो है मुंबई इंडियंस दूसरे स्थान पे आ चुकी है, यूपी वॉरियर्स ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार दी है। ऑफ कोर्स क्योंकि 8 मैच खेले जाते हैं, 8 में से 6 मैच खेल चुके हैं आप और उसमें से अगर आप सिर्फ 2 मैच जीते, तो फिर तो भगवान भरोसे है कि आप कैसे टॉप 3 क्वालीफाई करेंगे। तो यूपी वॉरियर्स ने अपने हाथों से जीता हुआ मैच गँवा दिया है। 160 रन का टारगेट और 118 बने सिर्फ़ और सिर्फ़। कृष्णा आवाज़ आ रही है आपको मेरी? जी कृष्णा बहुत स्लो आवाज़ आ रही है, आप माइक लगता है आपके पास नहीं है। मैं आवाज़ सुन नहीं पा रहा हूँ, बहुत स्लो आ रही है, बहुत स्लो और मेरी आवाज़ रिपीट हो रही है। एक बार आप वापस जाके दोबारा आओ। हाँ, अब आ रही है, अब आ रही है। ठीक है, तो कृष्णा कैसे हैं आप? डिनर हो गया आपका? जी। तो कृष्णा अगर आज की बात करें तो किस तरह से रेट करेंगे यूपी वॉरियर्स की बैटिंग की? ओके कृष्णा जब तक आते हैं फिर बात करते हैं आगे। तो यूपी वॉरियर्स के लिए देखिए संकट अब बहुत ज़्यादा हो गया है, 2 मैच बचे ज़रूर हैं और आप 2 मैच में अगर दोनों मैच जीत भी जाते हैं तो आप मैक्सिमम कितने पॉइंट्स ले सकते हैं, वो है आपके 8 पॉइंट। मैक्स टू मैक्स आप 8 पॉइंट तक जा सकते हैं। और यूपी वॉरियर्स की एक प्रॉब्लम और है कि आपका मैच है दिल्ली कैपिटल से और यू गुजरात जायंट्स। मान लीजिए एक प्लेस पे आप गुजरात जायंट्स को हरा भी दें, तो भी आप 6 तक पहुँचेंगे। फिर आपको दुआ करनी पड़ेगी कि आरसीबी अपने बचे हुए दोनों गेम हार जाए, डीसी और एमआई से, जो कि हो भी सकता है। इट इज़ पॉसिबल। सो आरसीबी से तगड़ा मुकाबला है और यूपी वॉरियर्स को अगर अपने आरसीबी के बराबर रखना है, तो बचे हुए 2 मैचेस में से 1 मैच ज़रूर जीतना पड़ेगा। अगर आप बचे हुए 2 में से 1 मैच भी जीत जाते हैं, ठीक-ठाक रन रेट हो जाए आपका, आप अभी नेगेटिव में भी चल रहे हैं, सबसे बड़ी बात यूपी वॉरियर ये है और यूपी वॉरियर्स के लिए सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि कल इनको दिल्ली कैपिटल से खेलना है, तो अब कैपिटल से दिल्ली में खेल रहे हैं, बहुत मुश्किल होने वाला है, पता नहीं कैसे जीतेंगे ये मैच और अब बहुत मुश्किलों का सामना इनको करना पड़ेगा। तो देखना पड़ेगा अब किस तरह से ये दिल्ली कैपिटल्स से ये किस तरह से मैच खेलेंगे, क्या ये जीत पाएँगे मैच? ये अपने आप में बहुत बड़ी बात क्योंकि अभी दिल्ली कैपिटल्स के 3 मैचेस बचे हैं, 3 मैचेस रिमेनिंग हैं और इस 3 मैच में अब दिल्ली कैपिटल जो है फाइनल में जाने की ज़रूर कोशिश करेगी। तो चलिए बात करते हैं कल के वाले मैच की और किस तरह से दिल्ली कैपिटल्स जो है कॉन्फिडेंट हो गया यार, ये बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ा है इस वक़्त दिल्ली कैपिटल्स का, उसके बारे में बात करते हैं। जी, तो कल जो गेम खेला जाने वाला है वो है दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस यूपी वॉरियर्स और दिल्ली कैपिटल्स की बात करूँ तो पिछले मैच में आपने एक ऐसी टीम को हराया है जो फाइनलिस्ट थे, आपके साथ फाइनल खेले थे, ट्रॉफी भी जीती थी और एक ट्रॉफी विन टीम को जब आप हराते हैं अच्छी तरीके से, कन्विंसिंग तरीके से, तो मैं समझता हूँ कि कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ा रहता है। ऑफ कोर्स आपने अपने होम ग्राउंड में पहली बार मैच को जीता और बैटिंग बॉलिंग यूनिट सारी की बात करता हूँ दिल्ली कैपिटल्स की, फिर हम यूपी वॉरियर्स पे भी आएँगे कि यूपी के लिए कितना मुश्किल होने वाला है। सबसे अच्छी चीज़ ये हुई है मैगलेनिंग की हाफ सेंचुरी
जिमीमा रॉड्रिक्स का सही टाइम पे फॉर्म में आना, वो दिल्ली कैपिटल्स के लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। देखिए शेफाली वर्मा 250 ऑलरेडी लगा चुकी हैं, वो भी फॉर्म में हैं। एलिस कैप्सी ने 150 लगाई है इस सीरीज में। मेरिसन कैप की बात करूं तो वो बॉलिंग से अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। जेस जोनासन नो डाउट, मतलब डेथ ओवर्स में अगर आपको बल्लेबाजी करवानी है आप बल्लेबाजी करवा लीजिए उनसे, उनसे बॉलिंग करवानी है आप पावर प्ले में 2 ओवर करवाइए, 2 ओवर डेथ में करवाइए। तो जेस जोनासन बहुत शानदार खेल रही है। तो ओवरसीज प्लेयर्स की मैं बात करूं तो दिल्ली कैपिटल्स टॉप पे चल रही है, एकदम बिल्कुल टॉप एंड टॉप। एलिस कैप्सी फॉर्म में, जस जोनासन फॉर्म में, मेरिसन कैप बहुत शानदार तरीके से कंट्रीब्यूट करी है, मैगलेनी की हाफ सेंचुरी आई है। तो दिल्ली कैपिटल्स के लिए सब कुछ बहुत बढ़िया हो रहा है। इसके अलावा मैं बॉलर्स की बात करूं, टाइटस साधु, इनका बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। टाइटस साधु किस फॉर्म में है और इंडिया के लिए कितना अच्छा परफॉर्म किया रिसेंटली, और विकेट भी मिले पिछले में। हेलो कृष्णा, आवाज आ रही है आपको? हेलो कुणाल भाई, आवाज नहीं आ रही है? जी अब आ रही है, मुझे आ रही है आवाज। मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो कुणाल भाई, हाँ हाँ, आवाज आ रही है मुझे आपकी। आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप एक बार दोबारा से आओ वापस। डोंट नो मतलब क्या इशू हुआ है। मुझे आपकी आवाज तो आ रही है। कुणाल भाई, आवाज नहीं आ रही है। मैं तो सुन पा रहा हूँ, आपकी आवाज तो आ रही है मुझे। जी, मैं बात कर रहा था दिल्ली कैपिटल यूपी वॉरियर्स की। सो दिल्ली कैपिटल्स की बॉलिंग की बात कर लेते हैं। टाइटस साधु, शिखा पांडे, राधा यादव, मिनू मनी। तो टीम सेटल नजर आ रही है, मतलब दिल्ली कैपिटल्स की टीम सेटल नजर आ रही है। अभी तक टॉप ऑफ द टेबल भी है, नेट रन रेट भी बहुत शानदार चल रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। अपनी एबिलिटी पे खेलेंगे तो ये अच्छा स्कोर बना रहे हैं। 100 का स्कोर अच्छा बनाया था बिल्कुल पिछले गेम में। मेरे साथ कृष्णा है। हेलो कृष्णा, आवाज आ रही है मेरी? हेलो कुणाल भाई। आवाज आ रही है कृष्णा? मेरी आवाज आ रही है आपको कृष्णा? कृष्णा आवाज आ रही है आपको? कृष्णा आवाज आ रही है? जी जी। तो मैं था दिल्ली कैपिटल्स के बारे में बात कर रहा था, तो अब थोड़ी सी बात यूपी वॉरियर्स से कर लेते हैं। यूपी वॉरियर्स करो या मरो का मुकाबला है ऑफ कोर्स, क्योंकि अब देखिए दिल्ली कैपिटल्स को हराना बहुत मुश्किल रहेगा, बहुत ज़्यादा मुश्किल, क्योंकि जिस तरह की परफॉर्मेंस अभी तक रही है, जिस तरह की फॉर्म दिल्ली कैपिटल्स ने दिखाई है, उस पर थोड़ा सा सोच विचार करना बहुत ज़रूरी है कि किस तरह से आप गेम को जीत सकते हैं। एक्चुअली गेम जीतना आसान नहीं रहेगा दिल्ली कैपिटल्स के सामने, और यूपी वॉरियर्स को अपनी एबिलिटी पे खेलना होगा। अगर बात करें तो एलिस हीली पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है। बेंच पे आपके तय मेगरा हैं। ऑफ कोर्स ताई मेगरा ने परफॉर्मेंस अच्छी नहीं की। ओके, ना मेरी आवाज़ अभी आपको आ रही है? मतलब कमेंट सेक्शन में हो तो आवाज़ आ रही है मेरी अभी? अगर आप ज्वाइन नहीं कर पा रहे कोई इशू नहीं है यार, क्वेश्चन पूछ सकते हो। अभी मैं दिल्ली कैपिटल वर्सेस यूपी वॉरियर्स की बात कर रहा हूँ, जो कि कल होने वाला है। ठीक है, फिर इसके बाद हम इंडिया पे भी डिस्कस करते हैं, आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो। ठीक है। तो दिल्ली कैपिटल्स के लिए कल जो मैच है समझता हूँ वो आसान मैच है, क्योंकि देखिए आप होम में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बहुत ही शानदार तरीके से परफॉर्मेंस हो रही है। और अगर मैं बात करूँ यूपी वॉरियर्स की, यूपी वॉरियर्स ने जिस तरह से आज मैच गवाया है, कहीं न कहीं उनका टूर्नामेंट समाप्त होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि अभी आपको बचे हुए 2 मैचेस से अगर आप आरसीबी से कंपेयर करना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि हम पिछले साल की तरह तीसरे नंबर पे फिनिश करें डब्ल्यूपीएल में, तो आपको 2 में से 1 मैच हराना पड़ेगा, और प्लस नेगेटिव नेट रन रेट चल रहा है। सो मेरे को डर है कि कल यूपी वॉरियर्स जब हारेगी तो शायद उनका नेट रन रेट और खराब हो सकता है। सो देखना होगा कि दिल्ली कैपिटल से किस तरह से यूपी वॉरियर्स जीतते हैं, क्योंकि यूपी वॉरियर्स का टाइम बहुत खराब चल रहा है। अगर मैं उनकी बैटिंग की बात करूं तो एलिसा हिली फॉर्म में नहीं है, किरण नफीरे भी फॉर्म में नहीं है, अट्टा पट्टू का बल्ला नहीं चला आज, और कल कैसे चलेगा अभी ये देखने वाली बात रहेगी। ओके, कृष्णा आवाज आ रही है आपको मेरी? ओके,
आई थिंक ये इशू चल रहा है इनका। ओके, तो देखना पड़ेगा, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे इनको फोकस करना बहुत ज़रूरी है यूपी वॉरियर्स को, अगर अपने टूर्नामेंट को बचाना चाह रहे हैं। सोच है इनकी कि टॉप थ्री में अपने को फिनिश करें, और मोस्ट प्रोबेबली ये नंबर तीन पे फिनिश कर पाएंगे, क्योंकि अब जो सिचुएशन की आ चुकी है, और अब देखना होगा, और एक अलग लेवल की क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। टू बी फेयर, जिस तरह से ग्राउंड में अभी मैचेस चल रहे हैं, और दिल्ली कैपिटल्स जिस फॉर्म में है, उनके बॉलर्स जिस तरह से फॉर्म में है, आपको एक बड़े लेवल की क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। अदरवाइज दिल्ली कैपिटल्स के लिए ब्रेड एंड बटर है, ये बड़ा इजली ये गेम जीत जाएंगे, और फिर यूपी वॉरियर्स आप समझ सकते हैं कि आपका जो है कुल मिला के डिपेंडेंसी आरसीबी के मैचेस पे होगा, कि आरसीबी जो है अपने एक भी मैच ना जीते नेट रन रेट पे आ जाएगा, और लास्ट मैच आपको जीतना पड़ेगा, जो कि आप गुजरात जायंट्स से जीत भी सकते हैं, लेकिन गुजरात जायंट्स भी जीत के आ रही है। सो बहुत सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन है गाइस, और टूर्नामेंट जो है वो बिजनेस एंड में आता जा रहा है, जहाँ पे अब देखना ये वाली बात देखने वाली बात ये रहेगी। देखिए, दिल्ली और मुंबई के बीच में तो ये कंपटीशन लगा रहेगा कि टॉप पे कौन आए, क्योंकि जो वन पे रहेगा वो डायरेक्ट फाइनल में क्वालिफाई करेगा, और जो टू पे होगा वो थर्ड के साथ एलिमिनेटर खेलेगा। सो ये तो कॉन्टेस्ट है, अब देखने वाली बात रहेगी कि किस तरह से चीजें आगे बढ़ती है। देखना होगा कि किस तरह का परफॉर्मेंस अब होता है, क्योंकि अब कुल मिला के बात अब ये आती है कि मैच आपको जीतने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप यहाँ से गेम नहीं जीतते हैं, तो यूपी वॉरियर्स के फैंस के लिए आई एम सॉरी, अब आपका जो टूर्नामेंट एंड हो जाएगा, क्योंकि नेट रन रेट का भी इशू है, जो कि बहुत बड़ा इशू बन रहा है टीम के लिए। और अगर आप अपने दोनों मैच जीत जाते हैं, और ऑफ कोर्स, तो वहाँ से अगर आरसीबी अपने दोनों मैच हार जाए, तो आपकी जो चीज़ें हैं वो आसान हो जाएगी। सो बहुत इंटरेस्टिंग मोड पे आ चुका है ये टूर्नामेंट, और बहुत ज़बरदस्त टूर्नामेंट चल रहा है ऑफ कोर्स, और बहुत मज़ा आ रहा है, और उम्मीद है कि और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। अभी और भी मैचेस होने हैं, बहुत बड़े-बड़े मैचेस, और ऑफ कोर्स अरुण जेटली स्टेडियम में मैच हो रहा है, तो आज अच्छे स्कोर की उम्मीद थी, बिल्कुल 160 के जवाब में उम्मीद थी, और डिसअपॉइंट किया यूपी वॉरियर्स ने, स्पेशली मुझे, क्योंकि मैं उम्मीद कर रहा था कि यूपी वॉरियर्स जो है इस स्कोर को बना लेगी आराम से, जो उनके पास एबिलिटी है, जो उनका बैटिंग टैलेंट है। मुझे लगता है अगर आपको आगे टूर्नामेंट में सोच रहे हैं कि थोड़ी-सी आस बनी रहे कि हम कुछ जीत सकते हैं, तो आपको लग रहा है, मेरे को लग रहा है कि आपको तालिया मेगरा को बुलाना होगा, और आप तालिया मेगरा को नहीं बुलाते हैं, तो मुझे लगता है आपका टूर्नामेंट खत्म हो चुका है। सो या फिर आप डेनियल वॉर्ड को बुला लीजिए, क्योंकि चमारी अट्टापट्टू से परफॉर्मेंस हो नहीं रही एक्चुअली। सो जब परफॉर्मेंस नहीं हो रही है, तो कभी-कभी कॉल्स लेने पड़ते हैं, शायद वो कॉल लेने का समय आ चुका है, और यूपी वॉरियर्स अगर अपने को देखना चाहते हैं क्वालिफिकेशन में, थोड़ा-सा भी चांस देना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि उन्हें ये रिस्क लेना पड़ेगा, एक्चुअली ये रिस्क लेना पड़ेगा, और शायद चमारी अट्टापट्टू की जगह आप डेनियल वॉट को यूज़ कर सकते हैं, जो कि अभी तक टूर्नामेंट नहीं खेली हैं, ऑफ कोर्स। और जब आपके टीम में कुछ भी अच्छा चल नहीं रहा हो, तो आप ज़रूर बेंच में पड़े हुए प्लेयर्स को यूज़ कर सकते हैं। मेरे को ऐसा लगता है शायद डेनियल वॉट के आने से आपका नेट रन रेट थोड़ा बेटर हो जाए, ये भी इसकी पॉसिबिलिटी है। सो देखने वाली बात रहेगी कि किस तरह से चीज़ें आगे होती है, और कुल मिला के बात ये है कि देखिए, बेशक है यूपी के लिए, अगर यूपी वालों को अगर आगे सोच है कि आगे हमें क्वालिफाई करना है, अगर आप क्वालिफाई नहीं कर पाते, तो मेरे को लगता है बहुत मुश्किल है ये टूर्नामेंट आपके लिए। और डब्ल्यूपीएल बहुत ज़बरदस्त चल रहा है गाइस, आप लोगों को कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा। डब्ल्यूपीएल का मैच बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त। उसके अलावा चलिए एक और मैच की हम थोड़ी-सी बात कर लेते हैं ऑफ कोर्स, और जो कि अभी चल भी रहा है, और अफ़गानिस्तान वर्सेस आयरलैंड, जिसमें से अभी स्कोर की मैं बात करूँ, तो अभी स्कोर बहुत ज़बरदस्त हो गया है। 310 रन बनाए अफ़गानिस्तान की टीम ने, अफ़गानिस्तान वर्सेस आयरलैंड, और इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। सेंचुरियन की बात करते हैं, इससे पहले गुरबाज ने बहुत ज़बरदस्त शतक लगाया, जिसकी बदौलत आप कह सकते हैं एक बड़ा स्कोर देखने को मिला।
अफगानिस्तान और आयरलैंड के बीच ये मैच अभी चल रहा है और कितना स्कोर बचा है इसके बारे में बात करते हैं, लेकिन फर्स्ट इनिंग्स की भी मैं बात कर रहा हूँ। तो अफगानिस्तान आयरलैंड की बात करूं तो गुरबाज ने 121 रन बनाए, इब्राहिम जादरान 60 रन। तो ओपनिंग तो शानदार ही रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। 150 रन की साझेदारी हुई है दोबारा से। और ये साझेदारी पिछले साल हमने देखने को मिलती थी अगेंस्ट श्रीलंका जब भी खेले थे अफगानिस्तान की टीम से। और बहुत ज़बरदस्त साझेदारी हुई 150 रनों की। फिर इसके बाद अजमतुल्ला 19 रन बनाते हैं, नबी ने 40 रन बनाए। सो और शहीदी ने आखिरी में 33 गेंद में 50 रन बना के एक रिस्पेक्टेबल टोटल बनाया। सो वो एक रिस्पेक्टेबल टोटल बनाते हैं तो चीज़ें आसान हो जाती है। सो 310 का एक टारगेट बनाया और उसके जवाब में अभी टीम बहुत बढ़िया संघर्ष कर रही है। 36 ओवर में 185 पे 3 7 विकेट बचे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों सेटल बैट्समैन अभी क्रीज पे चल रहे हैं। बेलबर्नी स्टर्लिंग जरूर जिन्होंने निराश किया बहुत जल्दी आउट हो गए, फिर कर्टिस कैंपर भी आउट हो गए। तीनों सिंगल डिजिट्स में आउट हो गए, मतलब 34 फॉर 3 थे। अभी 185 फॉर 3 है। तो बहुत जबरदस्त साझेदारी हो रही है दोनों बैट्समैन के बीच में। एक 87 रन पे खेल रहे हैं, एक 71 रन पे खेल रहे हैं। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग मोड पे चल रहा है ये गेम और उम्मीद कर रहे हैं कि अच्छा गेम होगा और शायद इस मैच को जीता जा सकता है बिल्कुल। तो मेरे साथ राहुल आए, मेरे फेवरेट। हेलो राहुल, हाउ आर यू? Yes, hi Kunal, how are you? Long time. So, yeah, long time, Rahul. I am missing you. Audience are also missing. That's why they are not coming. They are thinking that you are busy in examination, so you will not come for a long time. I think so. Yeah, I I was think very now you busy are over the free. last week. Yes, now I'm free. Yes. Okay, so Rahul, one by one, let's talk about that. So before that, let's talk about myself. That first game in Delhi, Delhi versus MI. I was in a stadium. I guess you know it. I guess. Okay, I didn't know you were in stadium during that match, but Yeah, yeah. Okay. So there, Delhi very convincing win against Mumbai Indians. So Rahul, can we see that Delhi might win this title? they have a very good chance of winning it. Now it's all home games for them. They're playing in home territory, so they have a very good chance of winning it for sure. Yeah. Okay. Okay. So Rahul, back from WIPL. Of course, WIPL is really great, but now comes to India versus England. What message you want to give to this England team? Means they are looking promising startingly, but at the end they disappoint everyone, every audience. This has been the story of England throughout the series. They've looked in promising positions and they've thrown it away. They've not been able to capitalize on it. It's been happening in almost every match, you could say. Only see in the second test match, England had India 24 for 3 on day one, but they couldn't capitalize on it. Then England had 207 for 2 at the end of 2 days. Even though India scored 445 in the first innings, England had 207 for 2 and in very quick time, in just 35 overs. They were 207 for 2 in that match. They couldn't capitalize on it. Then uh, in the fourth test match, they had many chances in the fourth test match. First of all, when they scored 302 for 7 on the first day, then they had India in 219 for 7 on day two. They really had a chance to get a huge first innings lead and uh, push for a 2-2 series tie. Then they had a 46-run first innings lead. They couldn't make use of it. They got all out for 145. Then, when defending 191, they had India at 120 for 5 at one stage, but they couldn't finish off the match. So they've had many chances in this series, but they've not been able to take it. Yeah, yeah, very disappointed. Okay, now And Rahul comes today to his. also, today also at lunch, 100 for 2 was the score. At 100 for 2, I thought England was really going to put up a fight, but they did not do that. And every time they've looked like they would really get themselves into a winning position, they've squandered it. So this has been the story of the series for England.
Yeah, of course. Okay, so comment on Yashasvi Jaiswal Rahul means excellent career, 700 runs in a series. Finally, he completed it, and Sunil Gavaskar highest score is 774. One innings is remaining, and Rahul, if I talk about Yashasvi Jaiswal, he can do anything in a test match. As of now, two double century. What a fantastic series for him. Yeah, it's been an absolutely fantastic series for Yashasvi Jaiswal. Really a good time he has had in this series, and I think he's established himself as an opener going forward for Team India. I look forward to seeing what he does in Test match cricket. Hopefully, he'll have a very good Test career, be a very good opener for Team India, and the future of Indian Test cricket in that regards will be very good. I think he has a very good chance to do well in Australia and the BGT. The pitches in Australia are generally very flat in nature, and also you have an aging Australian cricket team, an aging Australian bowling attack. So he has a good chance to do very well in the Australian tour as well. Yeah, of course. So as of now, Rahul, we are in a very good position. Actually, means if we Absolutely. bat whole day too, and Rohit Sharma is going to make a big score, I guess, because I as of now think he's I think not out. Rohit Sharma has found some form in the last two or three innings. He was struggling a lot in the first three Test matches, but he has found his form in this match. 52 of 83, not bad. I think he should go and convert it to a century tomorrow. Put India in a very strong position. We should somehow get 300 runs in the day, have a 200 or 250 run lead by tomorrow. And if we do that, then we are controlling this match. We should not have a collapse tomorrow where England suddenly comes out to bat and then they feel like they're in the match. Yeah, yeah, of course. So let's hope for a good game. And at the end, when your captain is performing, it looks very good because Rahul, at the end, he is a captain of T20 World Cup also. So you need some good innings to be confident before going to World Cup also. Uh, to be frank, well, I mean, we cannot mix up formats. To be very honest, we have to be a little careful because test form is not indicative of what he'll do in T20 cricket. I think we'd get a better indication of how he'll do in the T20 World Cup by seeing the IPL rather than these test matches. Both of them have to be considered in a separate vein. So hopefully he will do well in the IPL. Both Rohit Sharma and Virat Kohli are short on international T20 cricket. So really, the IPL is where they have to excel to show that they are ready for this T20 World Cup. Okay, okay, Rahul. One match is already in trending where Ireland is 197 for three. Do you think this target is chaseable while both are very settled batsmen is there? Absolutely. 114 of 71 balls in this day and age of T20 cricket is very much gettable. They put themselves in a very good position. Harry Tector and Lorcan Tucker, they batted really well. After being 34 for 3 to come to this position is quite fantastic, in my opinion. So they've got a very good chance of winning this game. It's going to be a very interesting finish to the match. And if I talk about Afghanistan team, Ibrahim Jata and Gurbaz opening partnership again in a matter of 18 months. Means 18 months ago they have done the same partnership against Sri Lanka. Now again they performing and as a opening partner. What a good contribution from both of them. Well done. Yes, sir, absolutely. Great. Ramanullah Gurbaz and Ibrahim Zadran has been a very solid opening pair for Afghanistan, and they've proven it time and again that they are very capable openers. They gave Afghanistan a very good start. Hopefully, they will continue like that. Ramanullah Gurbaz is 22 years old. He has a great future ahead of him. So does Ibrahim Zadran. Both are 22 years of age, so they can really form a great alliance for a good 10 or 15 Yeah, years, I up would to say. yeah, up to 15 years. They've, Yeah. Okay, yeah, Alok is they've asking. already had a very early start to their career. So, and if they have a good 10 or 15 years, you can imagine what kind of
a team Afghanistan will become in this period. I think they will be a big threat, and hopefully, I don't want to get too political here, but hopefully can get cricket in Afghanistan. They can play in Afghanistan and have a home ground there rather than playing home matches in UAE, because that will really bring the fan loyalty. You want Afghanistan to play in Kabul or uh, wherever place. You want the Afghanistan team to play in Afghanistan, then that's where the sport will really flourish there. There's already lots of popularity for cricket in Afghanistan. They do have their leagues in domestic cricket or whatever there, but you want to see international cricket happen there. That is only good for Afghanistan. Yeah, yeah, okay. So Alok is asking that finally your exam is over. Yes, finally my exams are over, Alok. Yeah. So So now Rahul I'm will be back. consistent now. So Yeah, now I Rahul will hope be I can be consistent in the field. consistent. Yeah. But I mean, it's great. I've been consistent until this time, given my time zone, because I do these shows in the middle of the day. Uh, so it's been great that I've been able to be consistent so far. I hope I can keep it up in some way or the other. Yeah. Okay. Alok is asking who win the match. Alok, Mumbai Indians win it against UP Warriors, but very disappointed. Rahul from UP Warriors means 160 is the chaseable target in, especially in Kotla pitch. Arun Jaitley pitch 160 is chaseable, but you Yes, are not be able to absolutely. make And it. by the way, Fazal Haq Faruqi has got his third wicket of the innings. He has gotten the wicket of Lorcan Tucker. So it's 207 for 4 in 39 overs. So Afghanistan still they I feel they've got an opening here where they can try and win the match. They can target the new batsman, make it tough for Ireland. So let's see. Yeah, yeah, of course. But nowadays, after the introduction of T20 games, ODI is looking very interesting. Means all the teams are trying to chase the target. That is a positive. Absolutely, but you have to say one thing. It's one thing to try and chase the target, but abilities also matters. 300 odd can be a high scoring game if it's between teams like Afghanistan and Ireland. If this is India versus Australia, then you would say Australia still has a very good chance to win the match. They still have the upper hand in the match, but for a team like Ireland, you cannot say that. There's no guarantee. Let's put it that way. If this is India versus Pakistan or India versus Australia kind of match, then you can say that the batting team is kind of ahead in the match and the bowling team needs wickets. So it really see actually 300 being a chaseable target in ODIs or not really depends on the abilities of the teams. It is that kind of a target. In earlier days, even very good teams would struggle to chase 300, but even now, if you're not a very good batting side, 300 can be difficult to chase. So it really depends on abilities. Yeah. So Rahul, your comments for Kuldeep Yadav also means what bowling from his side. Kuldeep Yadav debut for Team India against Australia in the same ground. And second match India is playing, and second match is also playing by Kuldeep Yadav, 5 wickets. What a bowling performance, and led India one-sided. You can say at the end one-sided win led by Kuldeep Yadav. Yeah. Kuldeep Yadav, he's got a lot of years ahead of him in international cricket. I think he will be the next one to take over from Ravichandran Ashwin and Jadeja. He can, for a good 4 or 5 years, he can take over, and he's done really well against England yesterday, getting a 5 wicket haul. Ashwin also played a very good role, quickly finished off the innings, got 4 wickets. It's his 100th Test match, and he rose to the occasion in the end. Yeah, yeah, okay. Okay, now IPL is also coming, so let's ask some fan question from CSK about CSK. Okay, so Rahul Devon Conway not available means till May he will be not be available. Who knows he will not available after May also, but I think CSK is not going to take the replacement. So according to you, who is going to open with Rituraj Gaikwad? Very interesting question. I think the first name that pops into my mind is Rachin Ravindra. Rachin Ravindra has played at the top order for New Zealand a little bit, and the current CSK team, I'm not sure who else can really Don't you think replace Ajinkya Rahane? Gaikwad. Don't you think Ajinkya Ajinkya Rahane? Rahane is also a possibility, but it's been a long time since he has played at the opening position too.
So I'm not sure if I think he was coming from KKR. I think 2022. He was opening for KKR actually. So if he plays it's a better at possible. It's number three, definitely a possibility. I think two possibilities will be Rachin Ravindra or Ajinkya Rahane, really depending on whether Rachin Ravindra features in the playing 11 or not, because there could be venues where, maybe the pitch is not taking too much spin and Rachin Ravindra gets left out of the team, because CSK has got a load of spinners right now in the team. The team is overcrowded with spin bowlers, so you don't know whether Rachin Ravindra will really get a chance or not. But yeah, maybe Rahane can be the opener. Otherwise, Rachin Ravindra. I think both of these are very good options for CSK to go with. okay, Rahul, one Facebook post was there from MS Dhoni that he's very excited to take a new role. So, according to you, what is the new role for MS? He is not going to keep wickets, or he will be playing like Rishabh Pant, means first half of the season as a batsman and fielder, and second half as a wicket keeper, or something It else. would be pretty odd to see MS Dhoni fielding. To be honest, I because I Actually, think Rahul, both having Dhoni is same the kind of aggression. player who will. There's certain players, who need the wicket keeping gloves in their hands. Otherwise, they'll feel like, what to say, they're not wearing clothes. It's like that. It's for some people, if they don't have the wicket keeping gloves in their hands, is like part of their clothes. Without that, they'll feel like they're not wearing clothes itself. But anyway, to put that in But very Rahul, what is the new role then? I means Dhoni is very asking you. cryptic post. I don't know what he means by new role. I Okay, am prepared to even hear that somebody else is going to be the captain of the team and not Dhoni. That's what I'm might prepared be, to hear. might Or be. maybe So somebody else will be captain for some matches and he will come as an impact player. That I think that is yeah, that also a is. possibility for new roles. Some people were even speculating, saying he might be open the batting for CSK. That'll be a shocker, but um, you can't really put anything past Dhoni. He's known for making surprise decisions. So we have to see what this So so-called new surprisingly, role is. Rahul, who is your captaincy candidate? Of course, Ajinkya Rahane. I mean, I'm not sure who would captain the team instead of Of course, no Dhoni. Jadeja. Could be I know it Ajinkya very Rahane. well. There's no Ben Stokes. I don't think it's going to be Ravindra Jadeja because of what happened in 2022, the first half of that season. I don't think they will give it to Ravindra Jadeja. So I'm not really sure who could be the captain for So CSK in the suspense is absence of there. MS Dhoni. So there is a lot of suspense regarding that. Yeah, yeah, yeah. Of course, I think Rahul has some connection with Dhoni, so he will tell something. But okay, it's okay. No, it's hard to have a connection with Dhoni, to be frank. Even Dhoni, with his close friends, probably will not pick up phone if he answers. He's like that. Anyway, and you see with the Dhoni, he's hardly accessible outside. Uh, what to say, outside the team when the team is not playing, he's hardly That very accessible. He doesn't like to even post something too about much it. on social media. Yeah, yeah, of course. It's different personality. Yeah, let's see. But IPL is, you can say, 14, 15 days away, not more than that. So IPL is about to come. How much excitement is Rahul? First match, CSK versus RCB. Very big match to start the tournament. It's starting the same way as in 2019 IPL. 2018 CSK won the IPL, and 2019 as CSK won the IPL in 2018, equaling with Mumbai Indians titles at three. And next season, CSK started off against RCB in Chepauk. Same thing. This time, same correlation. 2023, CSK equaled Mumbai Indians record in the IPL with five titles, and now starting with against RCB at Chepauk. Very interesting. We have to see what will happen. CSK has lost to RCB in Chennai only once in IPL history, which is the very first season, 2008. Since then, RCB has not been able to defeat CSK in Chennai. They've won matches in Chennai before,
I think one or two, but they haven't defeated CSK in Chennai. Yeah, okay. Okay, Rahul, at the end, prediction time. Tomorrow, do you think Rohit is going to make century? Yes or no? I think he will make a century. This England bowling attack is looking a little bit off. So I think Rohit Sharma can make a century tomorrow. I won't bet against it. Let's put it that way. He's looking in good form. I think he can do it. He'll scores very quickly, and India's in a very good position. So if he doesn't score a century, he'll feel like he missed out here. Yeah, okay. How much Devdutt Padikkal will show the impact with a bat, and how much you are expecting from Devdutt Padikkal at number 4? Yeah, he's a very good test batsman. He's a debutant. Let's see what he does. I don't want think the team should put too much pressure on him to score. He should try to make use of the opportunity he gets, but he is a newcomer, so I wouldn't. I'd be very surprised if he comes and scores a century tomorrow. I think he can score a half century for sure. Okay, Rahul, only 2 wickets remaining for James Anderson to become a 700 test wickets in his career. Do you think before this tour ends, James Anderson will complete it? He has a very good chance on this pitch, Dharamshala pitch. Yeah, okay, this is like playing in England for them, but it hasn't really shown so far. To be frank, in fact, Ben Stokes could have made the decision of bowling first on this wicket because there was a lot of swing. There's a lot of swing in early morning in Dharamshala. These are like very cold conditions where the ball swings a lot. I'm very surprised Ben Stokes didn't choose to bowl first. James Anderson could have really taken advantage of this pitch in Dharamshala. Yeah, okay. So let's see, Rahul, how things will goes on, and hope for a good game, and just enjoy it, and waiting for IPL, Rahul, where every day will be lots of excitement, lots of big scores. Absolutely. Well, it's going to be what to say. Definitely, lots of tamasha will go on. It's going to be what to say a good practice for the T20 World Cup. Hopefully, that's more important. To be frank, I'll hope for CSK to win the title, but get the sixth IPL trophy, and have be the sole leader in terms of IPL trophies. But if it doesn't happen, well, hopefully it's not Mumbai Indians that wins the title. But uh, yeah, let's see what happens. It's going to be interesting. Yeah, of course, of course. And Rahul, IPL is a time where Indians are divided into states. So state-wise, they are just arguing. This is my player. This player will do something. Won't be divided really along state lines. Divide by franchises for sure. Yeah, That you can say. Given Chennai Super Kings, my team has support everywhere. CSK gets support everywhere, not only in Tamil Nadu but everywhere else as yeah, well. yeah. So let's see. I mean, we'll have to see all the fan fights, all that stuff. That's part and parcel of IPL. But hopefully there'll be some good talent coming through. We'll prepare well for the T20 World Cup, and then yeah, take it from there. Yeah, okay. Okay, so thank you very much, Rahul, and let's hope for a good Ronald. game tomorrow, and India will dominate it and make it 4-1. Yeah, hopefully it'll be a 4-1 finish for Team India. Let's hope for that. Yeah, and then we will be, you can say that we have some chances to qualify for finals also. That will be also uh, Absolutely. great. So thank you, Alok. Thank you, Krishna, for coming. Thank you, Rahul, to you also. So we will come back Thank and you. we'll talk about WPL as well as test match. So guys, just subscribe KFCS and Sports. With see you tomorrow. Bye bye and good night. Good night.